इनकाद किया गया है। और हमारे ब्रेडफोर्ड से तशरीफ लाए हमारे मेहमान साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अहसन शाह शराफत नौशाही दामत बरकातुहुल आलिया, और उनके साथ साथ साहबजादा वाला शान साहबजादा सैयद तबस्सुम हुसैन शाह साहिब नौशाही मद्दज़िलुल आली तशरीफ ला चुके हैं। तो हम बिला ताखीर उनको मैं अर्ज करता हूँ कि अपने मवाज़ हसन से हमें नवाजें। उससे कबल मैं दो अशार पेश करना चाहता हूँ। जनाब, जैसे आपको हजरात को पता है, हमारे जो नौशाही हजरात हैं कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद हमारा उर्स मुबारक है किबला पीर से अबुल कमाल बर्क नौशाही। तो एक मैं अशार पेश करता हूँ। और किबला पीर साहब, किबला पीर बर्क शाह साहिब रहमहुल्लाह, जब उनको कोई खत लिखता तो हमेशा उनको जो जवाब देते वो अशार की सूरत में देते। सुभान अल्लाह। When किबला पीर साहिब, when somebody used to write a letter to Qibla Pir Bark Shah Sahib, Pir Bark Shah Sahib always used to reply in अशार की सूरत में। तो वो पेश करता हूँ। वो फरमाते हैं कि वाहिद ला शरीक इलाही जिसते शान नियारे, जिसने नबी मोहम्मद कारण सब पसार पसारे, मशरक मगरब दखन पर्वत सूरज चंद सितारे, सारे नूर मोहम्मद वाला देंदाई चमकारे, आल असहाब रसूलुल्लाह दे कुर्ब उनादे पारे, सदा दरूद सलाम उनाते कीवी ना खलक पुकारे, गौसल आजम कुतुब रब्बानी चर्चा विच संसारे, उस सैयदी पाक जराबू फैज उठावन सारे, चोरा नू फर कुतुब बनावे डुबे बेरे तारे, कस्से रूह फरिश्तियां कोलो कौन कोई दम मारे, और हजरत नौशा गंज बख्शदा जेरा नाम चितारे, उसनू मिलदा कुर्ब हुजूरी किसे मैदान ना हारे, जा कोई दुखिया औखे वेले कारण मदद पुकारे, उस दी दुखों जान छुड़ावन पहुंचन विच पलकारे, और तब दे मिलिया खत तेरा आमेनू परिया नाल प्यारे, अल्लाह साइया करम कमावी पहुंची विच पलकारे, और तब दे दिसन अखां अगे दोज़ख दे अंगियारे, कर ले नेक कमाइयां कोई तां पासी चुटकारे, और तबा मेरी नू बख्शिश रब्दी खांदी तेज उलारे, तूल फजूल कहानी काफी हर्फ इयो दो चारे, बस बरक पर कलमा मुंह होवन पार उतारे, कल में बाज खलासी नाई होनी रोज शुमारे। अब बिला ताखीर हमारे मेहमान खुसूसी साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अहसन शाह साहिब शराफत नौशाही दामत बरकातुहुल आलिया अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफीज फरमाते हैं। उनके आमद से पहले इदारा औजे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, साहबजादा साहिब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि al-mutafaddil bi ni'mat al-ijad wal-imdad wal-is'ad wal-hadi li ibadihi ila sabil ar-rashad al-muwaffiq lahum fi kulli sha'nin ila suruq nahj as-sadad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخذها بيقين فهو في ازدياد. أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادة الأمجاد. اللهم بارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البأس والمعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وعلى
وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رف من الضيم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the master and the sustainer of the universe. And may countless salutations and incalculable salawats be upon the best of the creation, the leader of all prophets, our master Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And thereafter, my dearest listeners, as we're all aware that this is a gathering of Isal Sawab, and I pray Allah subhanahu wa ta'ala accepts this gathering and grants immense blessings and elevates the ranks of the deceased. As we all know that Haji Sahib, Yasin Qureshi Sahib, Khalifa Sahib, he has contributed immensely to the efforts of the mission of Sayyidina Shaykh Al-Qadir Al-Jilani and Sayyidina Hazrat Haji Muhammad Naushahi Qadiri Naushahi. And it is said that if a person is a party to any action of righteousness, Allah subhanahu wa ta'ala gives him the reward for it as well. Subhanallah. Bishatri kalima. Yani even if a single letter or a sign of approval a person showed in regards to the work of Deen, Allah subhanahu wa ta'ala gives him the reward as if he was the one who carried out the action. Subhanallah. And similarly, it also applies to the person who approved of or participated or showed signs of approval of action of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. The same applies to that, he will be a part of that. You see that due to the efforts of Khalifa Sahib, many individuals reformed their ways of life and adopted the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and held close to the way of the Ashab and Aslaf. And this is a major contribution. इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, खुद को नहीं बदल सकता इंसान, और अगर कोई और दीगर अखबाब, दीगर लोग उससे मुतासर होकर उससे के साथ जो उनकी सोबत है उसकी वजह से अगर उन पर उसका असर हो, उसकी वो बाइस बने, वो ज़रिया बने उनकी हिदायत का, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए जो है लोगों को अपना रास्ता उसकी तरफ रग़बत दिलाई हो उस शख्स के ज़रिए से, तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और बहुत कहने को तो बहुत आसान बात है, लेकिन अमलन ये बड़ा मुश्किल काम है। And he has had this impact on many of the youngsters in Preston and Holland, the time he has spent there. And it is because of his journey started in Holland, and the Ahbab there, they also know him quite well, and his presence is, his absence is felt not only here but in the Netherlands as well. He was a very blessed individual. May Allah subhanahu wa ta'ala raise his ranks as well. We need to understand is that in this path of Deen, a person must have the right intention and work sincerely for the sole purpose of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And therefore this is also the commandments of our, the teachings of our Mashaykh as well, and especially in Tariqa Naushahi, Sayyidina Haji Muhammad Naushahi Qadiri said that my path is the path of Rasulullah. So a person must strive at all given moments to obtain knowledge. No matter how busy we are, we always have time. So it's just an excuse that we don't have time. We find time for other things that are
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, "Min husn al-Islam al-mar'i tarkuhu ma la yani." Yani, a believer, it is a sign of iman of a believer that he leaves everything that does not concern him. So instead of spending time in useless activities and activities which bear no reward or fruit in the hereafter, it is always better to spend whatever time we have in the uptake of knowledge, because that is ilm nafi, and Allah subhanahu wa ta'ala says that people who have knowledge cannot be the same as people who do not have knowledge. So important thing is to spend whatever we have time from the time that we have, and especially make time to study in whatever way possible and gain benefit from the ulama. This is important, and this is what I want to convey, that in the times of tribulations that we're living today, we see that there is a lot of information to the contrary, minds are easily delusioned, and there's a lot of deception of shaitan and nafs, and then intellectuals who call themselves intellectuals, and then they bring up such information that if you do not have knowledge, you do not have the ability to answer those or understand the issue at hand. So therefore it is important that if we have 2 hours in a week, 3 hours in a week, 1 hour in a week, whatever time we have, we spend that time in the uptake of knowledge, learn something, and especially start from a young age so that we can continue, and this becomes a part of our life. So pray Allah subhanahu wa ta'ala gives us the ability to learn knowledge and make time to learn the deen and act upon the deen. And Allah subhanahu wa ta'ala gives us the ability to purify ourselves and our intentions and work sincerely in the service of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah subhanahu wa ta'ala elevates the rank of my Shaba as well, and forgives her shortcomings, and Allah subhanahu wa ta'ala grants her the intercession and shafa'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.